Assalamu alaikum students. Our today topic is proportion as principle of design. This is the part 1 of this topic. What is design? Design is the creation of a plan or convention for the construction of an object or a system. It may be an architectural blueprints, engineering drawings, business processes, circuit drawing diagrams or sewing patterns or embroidered patterns. Design has different uh, connotations in different fields. Design is what links creativity and innovation. It shapes ideas to become practical and attractive proportions for users or customers, clients or customers. Design may be described as creativity deployed to a specific end. These are the principles of design. Uh, this list is one possible list. Every artist has its own list. Uh, Different people add different topics or delete the topics. Rhythm, movement, pattern, balance, proportion, emphasis, variety, harmony, and unity. This is the composition of elements and principles. Line, shape, size, space, color, texture, value are the elements of design. And balance, contrast, emphasis, proportion, pattern, gradation. These are the principles of design. First of all, we will understand what is proportion. Proportion refers to the proper or harmonious relation of one part to another or to the whole. किसी भी चीज़ के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कंपैरिजन में रिलेट करने को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. Proportion in art is the comparative harmonious relationship in a composition with respect to. ये प्रोपोर्शन साइज में भी हो सकता है, कलर, क्वांटिटी, डिग्री, सेटिंग्स, रेशो, तमाम इन चीज़ों में प्रोपोर्शन क्रिएट करना, एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना है. A relationship is created when two or more elements are put together in a composition. This relationship is said to be harmonious when a correct or desirable relation exists between the elements. कब इसको हम कहेंगे कि ये हारमोनियस है? जब दो चीज़ों के दरमियान बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप बनता है. This refers to the correct sizing and distribution of an element or object which creates good proportion. Good proportion adds harmony and symmetry or balance among the parts of a design as a whole. जब हम उस डिज़ाइन को एज अ होल देखते हैं तो उसके तमाम पार्ट्स बड़ी खूबसूरती से, बड़े हारमोनियस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक यूनिट बना लेते हैं. और अगर उसमें से किसी भी पार्ट को डिस्टर्ब किया जाए तो वो डिज़ाइन अपनी वैल्यू खो देता है. नाउ प्रोपोर्शन एंड स्केल. फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल प्रोपोर्शंस. मटेरियल प्रोपोर्शंस क्या होंगे? ऑल मटेरियल्स हैव रैशनल प्रोपोर्शंस इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उसकी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से या अपनी वीकनेसेस के हिसाब से वो आपस में डिफरेंट प्रोपोर्शंस को कैरी करते हैं. स्ट्रक्चरल प्रोपोर्शंस, स्ट्रक्चरल टास्क, visual indicators of size and scale. These are the structural proportions. And manufactured proportions means manufacturing some model or some painting or some design. Its manufacturing process is a manufactured proportion होगा. Proportioning system. Proportion means relation of one part to another or whole equality between two ratios. And what is the ratio?
Ratio is the relation in magnitude, quantity, or degree between two or more similar things. Rhythmic, sorry, uh, eurythmy, harmony, or movement. Fibonacci series, unending sequences of numbers. This is the Fibonacci series. Harmonic series, harmonic progression, sequence of numbers, or reciprocals, arithmetic progression. What is ratio? A ratio refers to the quantitative comparison of two similar things, while proportion refers to the equality of ratios. It can be represented by different, you can see in image, its example. Aspect ratio, ratio in size of a door or window in a building. It can be represented by different comparisons of sizes of walls and windows. Proportion between hands to whole body, that is a golden proportion. In this image you can see the orders, different style of orders, and the size of ball. There is a strong ratio between these two objects. Proportioning system go beyond the functional and technical determinants of architecture, form, and space to provide an aesthetic rationale for their dimensions. They can visually unify the multiplicity of elements in an architectural design by having all of its parts belong to the same family of proportions. They can provide a sense of order in and heighten the continuity of a sequence of spaces. They can establish relationships between the exterior and interior elements of a building. You can see the proportions used in building. The upper half is the internal scene of a church, and the lower half is a um, big building, may be used domestically or may be used commercially, but proportions are excellent. In this picture, you can see what is a good proportion, the ratio between the sizes of parts and which are shown by yellow, black, and white color, and the bad proportion. Equal division creates monotony. If it is excellently divided into two parts, half part, it is not a good proportion because it creates monotony. And if division too unequal, creates a lack of harmony. In the lower side you can see that the yellow or black is very big part, and the white or yellow in triangle is a very small in size. This type of division is not harmonious, so it is not a good proportion. Proportion is usually not even noticed until something is out of proportion. When the relative size of two elements being compared seems wrong or out of balance, it is said to be out of proportion. For example, if a person has a head larger than their entire body, then we should say that they were out of proportions. In the bad proportion, examples on the right of the illustration above, the top row, which uses equal division of the shapes, creates monotony, and in the bottom row, the very unequal division creates a lack of harmony. So it is not a good proportion, it is a bad proportion. What is good proportion? How you can create good proportion? These are the points through which we can create good proportions.
Place together elements which are similar in character or have some features in common. Next one, create major and minor areas in the design since equal parts can quickly become monotonous and boring. However, the differences in size must not be so great as to make the parts appear unrelated and therefore out of harmony with each other. The third one is arrangement of space should be in such a way that the eye does not perceive a standard mathematical relationship dividing up the composition in halves, quarters, and thirds should be avoided. A subtle relationship creates a more dynamic design. Create harmony in the composition. Harmony is an agreement between the shape that stress the similarities of all parts. In other words, the shape of one part should fit the shape of the adjoining elements. Shapes should fit properly in their positions and spaces. ये चारों पॉइंट्स अच्छे गुड प्रोपोर्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई पेंटिंग बनाएंगे या डिज़ाइन बनाएंगे तो हम स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि हमारे प्रोपोर्शंस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। और उसमें जो ख़ास बात है वो ये कि हम इसके साइज़ को देखें, इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट को देखें, उसकी प्लेसमेंट को देखें, कहाँ पे हमने वो चीज़ें बनानी है और रखनी है। फिर उनकी आपस में कनेक्टिविटी क्या है। अगर वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फार ऑफ प्लेस की गई हैं, तो तब भी उनके प्रोपोर्शंस जो हैं वो एक दूसरे के लिए मैटर नहीं करते। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी पेंटिंग को आर्ट वर्क को मैथमेटिकली डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मैथमेटिकली डिवाइड करते हैं, जैसे हाफ्स में दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, चार में कर दिया, या उसके डिफरेंट पार्ट्स बना लिए, तो इस तरह की डिवीजन से वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और होल की सेंस को ख़त्म कर देती है, यूनिटी पैदा नहीं होती और वो प्रोपोर्शंस जो हैं वो मोनोटनियस हो जाते हैं, उनमें हार्मनी भी पैदा नहीं होती और व्यूवर का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। इसके अलावा वो कॉम्पोजिशन जो है वो चूँकि यूनिटी नहीं रखती, तो वो कॉम्पोजिशन स्कैटर्ड हो जाती है और ब्रेक कर जाती है। लिहाजा इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और शेप्स को इस तरह से एडजस्ट करें कि वो जैसे आप समझें कि जैसे हम किसी पज़ल्स वगैरह में कटिंग के एरिया के अंदर शेप को फिट करते हैं, तो वो शेप वहीं पे फिट आती है, दूसरी जगह पे नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही आपकी पेंटिंग के अंदर वो शेप जहाँ पे आपने फिट की है वो एग्जैक्ट प्लेसमेंट हो उसकी, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ हो और रिक्वायरमेंट हो, ताकि अगर वो शेप वहाँ से रिमूव करे तो आपको फील हो कि ये कंपोजिशन जो है उसका एसेंस ख़त्म हो गया है, उसकी यूनिटी ख़त्म हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो शेप उसको इतनी रिक्वायर्ड है कि उसकी वजह से वो उसका डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अलबत्ता बाज़ आर्ट वर्क्स जिनमें स्पेशली एब्स्ट्रैक्शन हम करते हैं या समटाइम्स फिगर्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो हम शेप्स को एग्जैजरेट कर देते हैं, उसको साइज़ को बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर देते हैं या ऐसे फॉर शॉर्टनिंग पोजीशन में ले जाते हैं या उसका पर्सपेक्टिव व्यू चेंज कर देते हैं। तो उसकी डिस्टॉर्शन से फिर भी उसकी यूनिटी ख़राब नहीं होती और वो एक प्रॉपर मैसेज को कन्वे करती है। तो ऐसा बहुत कम होता है और ये तब तक आप नहीं कर सकते जब जब तक रियलिज़म के ऊपर आपका कंट्रोल बेहतर ना हो और आप उसको फुली अंडरस्टैंड ना कर रहे हो। देयर आर टाइम्स व्हेन प्रोपोर्शन इज एग्जैजरेटेड, नॉट every time, to convey a message, especially for the messages. It is impossible to hold the bird in your hand. आपने कई इमेजेस देखे होंगे जिसमें ऐसे दो हाथ बने हुए हैं और उन्होंने एक ग्लोब को उठाया हुआ है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप दो हाथों के अंदर पूरी दुनिया को उठा लें। तो उस इमेज में आपने अक्सर देखा होगा कि हाथों के दरमियान बर्ड का ग्लोब है, तो इस तरह का इमेज जो है वो सिम्बॉलिकली, यानी दुनिया मेरे हाथ में है
तो इस तरह के जो इमेजेस हैं वो सिंबॉलिकली बनाए जाते हैं और एक प्रॉपर मैसेज को कन्वे करते हैं। तो इस तरह की सेटिंग में आप शेप्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, चेंज करते हैं या उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे बुक्स के नेम हैं, साइट्स हैं, और ये फर्दर स्टडीज़ के लिए स्पेशली मैंने डाली हैं क्योंकि प्रोपोर्शन का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कि ये प्रोपोर्शन जो है वो आर्किटेक्चर में भी यूज़ होता है और स्कल्पचर्स वगैरह में भी और पेंटिंग्स और उनके अंदर भी। तो इस वजह से प्रोपोर्शंस आपको स्केल वाइज और ये उसकी फ़िलासफ़ी, उसके आर्किटेक्चर में यूज़ और बाकी चीज़ें फर्दर आपकी स्टडी के लिए ये सारे लिंक्स मैंने डाले हैं ताकि आप इनसे गो थ्रू हों और इनको पढ़ें और मज़ीद अच्छा सा अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।